guys, welcome to my channel CodeVode. This is the first video of the series of cloud computing, and in this video we are going to discuss about so many things like mainly introduction of cloud computing and why cloud computing, where does it use, and so on. So let's get started. Okay, now what is cloud computing? तो बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ जी ये एक्चुअली होता क्या है. इट्स नथिंग बट अ स्टोरेज सिस्टम, rather online storage system. Like we have our traditional data storage like pen drive, hard disk, external hard disk, so on. तो हम generally we are single user, तो we generally use our traditional data storage. बट मान लो जहाँ पे मिलियंस ऑफ डेटा यूज होते हैं तो दे कांट स्टोर देयर मिलियंस और बिलियंस ऑफ डेटा इन स्टोरेज सिस्टम. सो इन दैट केस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेज अ वाइटल रोल. नाउ व्हाट इज तो मेनली ये एक ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम है जो ना हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी, and we can access our data we can access our data, fetch our data from anywhere, any locations, and from any device, and that is the most advantageous part of the cloud computing. Okay, so what is the story is that cloud computing is the online storage system that provides our storage, and we can fetch our data, access our data remotely money matlab we can access our data from anywhere, any location, but we must have internet connection on our device. Okay, now let's go for few technical definitions. The term cloud refers to a network or the internet. It is a technology that uses remote servers on the internet to store, manage, and access online rather than local drives. Having said, this is the online storage system. So we can access our data, we can fetch our data remotely. Okay. The data can be anything such as files, images, documents, audio, video, and more. जो हम लोग जो डेटा हमारे ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं तो वो सब डेटा वी कैन स्टोर इन क्लाउड स्टोरेज. ओके, and there are few operations that cloud performs, that is developing new applications and services. I mean, we can implement new applications, new services through cloud computing. Storage, backup, and recovery of data. And storage जो backup होता है वो that very easy to recover. Okay. Now, होस्टिंग ब्लॉग्स एंड वेबसाइट. आपने देखा होगा जितने भी ब्लॉग्स है, जितने भी वेबसाइट्स है, वहाँ पे बहुत सारे इमेजेस, वीडियोस यूज होते हैं. तो वो जो इमेजेस यूज होते हैं वो तो कहीं ना कहीं तो स्टोर है ना, अदरवाइज ये ब्लॉग्स में, ये वेबसाइट पे कैसे दिखेगा. तो दोज इमेजेस, दोज वीडियोस आर स्टोर्ड इन cloud system, cloud storage, and that company is providing cloud storage. Okay. Now, analysis of data. I have already told that जो ऑनलाइन पे डेटा होता है हमारा थ्रू क्लाउड, वी कैन एक्सेस देम रिमोटली, एंड वो हम उन डेटा के साथ ऑनलाइन पे कहीं पे भी वी कैन एक्सेस दोज डेटा, वी कैन मॉडिफाई दोज डेटा, अपडेट डेटा. सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ डेटा. नाउ लास्ट थिंग इज स्ट्रीमिंग वीडियोज एंड ऑडियोज. आपने देखा होगा यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे जो वीडियो स्ट्रीम होते हैं वो सब क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ही होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग. हम लोग सिंगल यूजर है तो हम लोग को तो ज्यादा डेटा नहीं होगा. इन जनरल आई एम टॉकिंग. तो हम लोग हमारे जो ट्रेडिशनल डेटा स्टोरेज डिवाइसेस है हम उसी से काम चला लेते हैं. लेकिन मान लो गूगल, फेसबुक, IBM, ये जो मल्टी MNCs है
तो they are having actually millions of billions of data. अब millions of billions users के लिए तो वो हम 1000 GB 2000 GB 1 TB 1000 TB डेटा स्टोरेज नहीं यूज कर, ट्रेडिशनल डिवाइस नहीं यूज करते है ना. तो इन दैट केस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेज अ वाइटल रोल. हियर क्लाउड कम्स टू द इनटू द पिक्चर. चलिए देखते हैं. Small as well as large IT companies follows the traditional methods to provide the IT infrastructure. That means for any IT company we need a server room. That is the basic need of IT companies. Every IT company need a server room to store their data, because they are having millions of billions of data, isn't it? And they can't store them in a single device. So they need that a complete custom service storage, server room. In that server room, that should be a database server, mail server, networking, firewalls, routers, modern switches, high net speed, and the maintenance engineers. अब एक देखिए, अब एक सर्वर, यू हैव अ सर्वर रूम, ये कंप्लीट सर्वर रूम, तो वो तो मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर्स होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, ट्रांसमिटिंग डेटा, वहाँ पे डेटाबेस होना चाहिए फॉर अपडेटिंग एंड modifying data, to store data, and firewalls, networking, routers, modem, so many things that needs to be there in to store your data in the server room. To establish such IT infrastructure, we need to spend lots of money. Now you can imagine, अगर मेरे पास एक server room है and I need that much of things like mails, I need mail server, I need networking, firewalls, routers, maintenance engineers, blah blah blah. I need that much of things to store our data. I mean, to store their data, that I'm talking about, that MNCs. तो हम क्यों ना एक इसके वजह ही हम एक क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अडेप्ट कर ले. हम अपने प्रोवाइडर को सब कुछ डेटा दे देंगे, हम उन लोगों को हम रेंट दे देंगे, और जो करना है हमारे डेटा के साथ, आई मीन मेनली फॉर स्टोरेज, वो करेंगे. सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. नाउ नेक्स्ट, and here are the few characteristics of cloud computing. Like, cloud computing provides efficiency, it provides high scalability. मतलब high scalability मतलब आप अपने storage को as pay as you go, I mean आप अपने storage को according to your need you can extend your storage. हाँ, definitely you need to pay more for that, but you can easily expand them whatever you want, whatever you need. And this is a multi-sharing, maintenance, low cost. Maintenance मतलब I have already told that जो cloud computing provider है वो already they have that infrastructure, they have that engineers, maintenance engineers, so they have already that environment to store to protect your data very efficiently. So you don't have to bother about those things. You don't have to bother about those data. So maintenance is very good. And services in the pay as you go. मतलब क्या है सर्विसेज? मतलब मान लो you need, आपने एक 200 MB का स्टोरेज लिया है फ्रॉम ए क्लाउड प्रोवाइडर, and after a few days you need more space, like you want to extend it up to 1 GB, so you can do it very easily. Definitely you need to pay more, but you can easily do that. So this is the service in the pay as you go. And now next is advantages of cloud computing. There are so many advantages of cloud computing. You cannot actually tell all of them, but among them I have taken few of them. Backup and restore data. Restoration of data is very simple and very efficient.
मतलब you can restore data, you can recover your data so easily. Okay, next is excellent accessibility. It can be used from anywhere, anytime, and from any device. Data easily be accessed. I have already told. मान लो you are traveling and you are traveling and you want to access a file that is kept in your cloud storage, so you can access it from easily from anywhere, from any location. Low maintenance cost. Unlike data stored in traditional way like hard drive, cloud is much less expensive to store data. Vast storage capacity. There is abundance of storage in form of cloud, so no need to worry about capacity. Whenever you whatever storage capacity you want, you can easily expand them. Data security. Data is absolutely safe in cloud. No concept of losing the data. मान लो हम मेरे पास एक फाइल है, मेरे पास फ्यू इमेजेस है जो मेरे हार्ड ड्राइव में रखा हुआ है, एंड मान लो हार्ड ड्राइव हैज बीन डैमेज्ड, तो मेरे तो सारा डेटा चला गया. But in cloud computing, there is no concept of losing data. I mean, they have that strong concept to maintain, to store you, to secure your data. Okay. Now disadvantages of cloud. अब definitely every coin has two side. इतने सारे advantages है तो definitely disadvantages भी तो होंगे. And first is internet connectivity, and that is you must have internet connection in your device to access the data, to manipulate the data. And limited control मतलब क्या है, मान लो अगर आपने क्लाउड स्टोरेज लिया है तो only you can access it, no one can access it. Or definitely if you want to share your credential to others, definitely they can access your data. Security. As it is maintained by third party, that cloud provider, so you should know what your data will be sending to those providers. अब देखो, जो थर्ड पार्टी होते हैं ना, जो मेंटेन करते हैं आपके डेटा, तो दे आर प्रोवाइडर, सो you are transmitting your data to them, you are handling your data to them, so you should be cautious about that. You should know your confidential data to them. Okay, so and next is cloud computing applications. एप्लीकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है मेनली. एजुकेशन, इट ऑफर्स, अब तो क्लाउड कंप्यूटिंग हर जगह अब यूज होता है. लाइक मान लो जहाँ पे भी डेटा का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे भी डेटा कम्स इनटू पिक्चर्स, देयर क्लाउड कंप्यूटिंग शुड बी देयर बिहाइंड दैट. Now education, it offers various online distance learning platforms and student information platforms to the students. मान लो गूगल एप्स हमारे पास है फॉर एजुकेशन, एंड गूगल जो ड्राइव है वो सब क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं. ठीक है. AWS इन एजुकेशन. अब हम अपने आने वाले वीडियो में AWS के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो हम वहाँ पे सब जानेंगे. So this is it for this video, and next video will be coming soon, and thanks for watching. So if you like the video, if you have gained any bit of knowledge, so please subscribe my channel and press the bell icon to get the latest notification first. So thank you.